done by him, because he, of course, is a very good yoga practicer himself, because he also practices yoga, is what he always says. And today being International Yoga Day, and of course all thanks to all the gurus, all the asanas that has been spread across the globe from India. That is more important. Like Kabaddi, which has gone international from India, yoga also has gone international from India, and it is awesome to know about that. बिल्कुल जन्मदाता जैसे अगर आप कहना चाहें योग का, तो हमारे चाहे ऋषियों की बात कर लें। और चलिए इस खिलाड़ी की वार्तालाप कर लेते हैं। पहले 11 नंबर जर्सी प्रतीक दहिया, 442 रेड की, यानी कि रेड्स बहुत सारी की है और उतने ही रेड पॉइंट्स उन्होंने कमाए हैं। 316, 18 सुपर 10 है। स्ट्राइक रेट भी अच्छा नजर आता है, 71.49। तो एक अच्छे खिलाड़ी हैं और आज एक बार फिर से इन पे दारोमदार बहुत सारा होगा नवीन। No, too much, because whatever those 316 points, if it has to have any value in the Yuva Kabaddi series going forward, that is today for Kaziranga Rhinos. But for Periyar Panthers, they have won 15 games out of 21, and the booster round has been a very, very big dream run for them, because they won a lot of matches consecutively. But Kaziranga Rhinos have got a thorn in the booster round, because they were not winning, but then, as I was guessing and expected, they will come back to win from the second round of the booster round, and that is what they have done. So it is all there, and let's now go for the countdown to begin this match. Match number 98, an all-important match for the Kaziranga Rhinos, as Sumanji gives the go-ahead to the biggest Panther. Ashish Narwal comes in and he is looking hungry. He is really looking hungry, because 291 raid points and did not play a few matches. And look what Pratik Daya has done. It's 316 now against 291. So the race is on for the top raider of Yuva Kabaddi series. But then, more importantly, Periyar Panthers will try to stop the Kaziranga Rhinos, but not against the biggest Panther. That's the first point for him. जी हाँ, बड़ा इंपॉर्टेंट यहाँ पर पहला पॉइंट प्राप्त करते हुए नजर आए हैं आशीष नरवाल, और पहली रेड में अपना शिकार बनाया जरूर राजनीश नरवाल। वहां से आकर ब्लॉक करना चाहते थे, फ्रंट ब्लॉक चाहते थे काजीरंगा राइनोज। अगर कैसे भी शुरुआत से ये आशीष नरवाल में थोड़ा सा दबाव बना ले, तो इस मुकाबले में आप पेरियार पैंथर्स पे दबाव बना पाएंगे। परंतु आशीष नरवाल ने बतलाया कि चलिए वो दूसरे क्रम पर मौजूद है बेस्ट रेडर में, और निश्चित तौर पर पहले पर आना चाहेंगे। परंतु प्रतीक दहिया कहेंगे कि आई एम द फर्स्ट ब्रो, ये मत भूलिएगा। Pratik Daya also getting blow to blow in the first raid, and once again it was the error from the right cover. And now Ashish Narwal will try to make something possible and try to revive his defense. So it is the two captains who are leading in the front, top one and top two raiders, and they are clashing in a very, very important game. And I'm trying to today see if we can coin a name for Pratik Daya, because we've given all good names to everybody depending on their skills. But let's coin out a name and think out a name before this match ends, Ashit. Pratik Daya, the Dubki comes in and then goes through the chain. And also he's got two simple points. What a raid. ओ ये प्रदर्शन आप देखना चाहते हैं इस प्रतीक दहिया से, और क्या बात है, क्या डुबकी वहां पर लगाई, क्या एस्केप करते हुए नजर आए। सबसे पहले चेन को तोड़ा और उसके बाद यहां पर जानते थे कि थोड़ा सा पर स्लाइड डुबकी लगाई, और एक शानदार अंदाज में यहां पर काजीरंगा राइनोस को बड़ा दिलाते हुए अपनी टीम के खेमे में। और पेरियार पैंथर्स यहां पर डिफेंडर्स से थोड़ी सी चूक हुई। आशीष नरवाल, आप देखना होगा किस तरह से ये इंपॉर्टेंट मुकाबला है। दोनों ही टीम यहां पर ये चाहेगी कि चैलेंजर राउंड में आप जाएं। पेरियार पैंथर्स के लिए भी मुकाबला इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि वो चाहती है कि एक मोमेंटम के साथ जाए, और काजीरंगा राइनोस के लिए तो ये मुकाबला जीतना बेहद इंपॉर्टेंट है अगर वो जाना चाहती है चैलेंजर राउंड में। क्योंकि आपने पॉइंट्स पर मैच देखा, अंक तालिका पर नवीन 2.62, यहाँ पर लगातार तीन टीमों के आपको पॉइंट्स नजर आए। Taroba Tigers from Chala Pride and also the Humpy Heroes. Now another error from the left corner, and Ashish Malik once again trying to go for the ankle hold, but not against Pratik Daya's speed.
and he is a very, very speedy raider when it comes to taking away points. And the first do-or-die raid of the match, and it is for the biggest Panther here. He will, of course, pounce. He will definitely make sure he will make this count, but the defense has to be very, very careful of the launch that he brings upon. There you see the right corner not being so confident, wanting to go for the chain, and then look at that. A running hand touch on the right cover. Did not even expect that coming. What a fantastic skill this is. Once again, it's Rajesh Narwal who has to go back on the bench. Did not expect at all. That's what I was trying to say, Harshit. They'll have to be very careful. When will the launch happen from the Panther? और जिस तरह से यहाँ पर पहले यहाँ पर कमजोर टैकल था यहाँ पर आशीष मलिक का, इस बार देखना होगा अनीश के साथ यहाँ पर मनु निश्चित तौर पर थोड़ी सी वार्तालाप करते हुए नजर आएंगे और नवीन वो डायलॉग सुनना चाहेंगे कि लेट अस टॉक. Absolutely. Yeah, that is what even Suman ji will say. Yeah, that's nice. That is very, very good. Yeah, lot of argument. I like this. She really reminds me of my principal, and this is required. Yeah, that is what the coach also is trying to say. Why do you have to go argue there? Anish from the right cover, and the swift toe touch from Manu kind of looked like Anish did not realize the force at which the toe touch was coming in. But Periyar Panthers under pressure in the initial match, and yes, Arshit, we are here to talk. And if you keep on talking, that's what will happen. You will get a green card. Once again, tries on Rajneesh Narwal. That diving hand touch, it is so lethal. He has to be very careful from the right cover there, Rajneesh Narwal. And now a super tackle situation. जी हाँ, प्रतीक दहिया यहाँ पर आए हैं और निश्चित तौर पर सुपर टैकल का मौका जरूर है. देखना हो कितना अंदर जाकर वहां पर प्रयास करना चाहेंगे, और लगातार हमने डीप जाते हुए देखा है उन्हें, और इस बार वो डीप जाएंगे, आशीष नरवाल को शिकार बनाएंगे बड़ी आसानी के साथ. वो जिस तरह से स्क्रीन पर आपको भी नजर आया कि कितना तेज दौड़ते हुए नजर आते हैं, बहुत अच्छे अंदाज से यहाँ पर हैंड टच किया और अच्छा शिकार बनाया वहां पर पेरियार पैंथर्स के कप्तान आशीष नरवाल का. Big fish, he got the big fish out of the game. And now it is Rinku, his first raid of the game. And it was all Ashish Narwal until now. That shows how much Periyar Panthers do not want Kaziranga Rhinos to win this match, because it will be a tough team going in to the challenger round, and Periyar Panthers will not want to have a tough team as Rinku comes back with a stolen bonus. A big defenders can't stop Parthik Daya. What would have Ashish Narwal done in the previous raid when he is charging so much? And look at that, another error. You cannot handhold Parthik Daya. Ashish Umed has to go back. Very easily done with the hand touch. Now once again it's Rinku to save the Periyar Panthers from the first all out, Harshit. It's a very big task. जी हाँ, बड़ा टास्क यहाँ पर रिंको के पास है. लगातार हमने कुछ परिस्थितियों में देखा है इन्हें इस तरह से अपनी टीम को बचाते हुए, परंतु काजीरंगा राइनोज का डिफेंस बिल्कुल यहाँ पर एक मत नजर आ रहा है कि चलिए आसानी के साथ रिंको को टच पॉइंट नहीं दिया जाएगा, ऑल आउट की तरफ खदेड़ना चाहेंगे और बिल्कुल एक बहुत अच्छे दहलीज पर पहुंचा दिया. इस बार देखना होगा, शानदार अंदाज से यहाँ पर आपको नजर आएंगे मनु, और शानदार टैकल यहाँ पर किया, चेन टैकर, और पहली मर्तबा यहाँ पर ऑल आउट कर दिया जाएगा पेरियार पैंथर्स को इस मुकाबले में. Mohit Kolar from the left corner came in so closely towards the cover, and then Rinku could not go under the chain for the dupki, and that is all Mohit Kolar who made sure the chain was low and strong. And now it is Manu to support Parthik Daya, and what big support Manu has come in with. That is really important. And I guess, is it Sahil Kumar? Yeah, correction, Sahil Kumar. But even Manu was so very important in the support for Parthik Daya. And so much pressure taken off from him. As Rinku's got the support for Ashish Narwal, he comes to the raid now. जी अब एक बार फिर से आशीष नरवाल आपको नजर आएंगे राइट रेड के साथ शुरुआत करते हुए. एक अच्छा पोजीशन इनका नजर आता है, जिस तरह से यहाँ पर पोस्चर लेते हैं, बहुत अच्छा क्लांस उनमें नजर आता है. इस बार भी बोनस का प्रयास करना चाहेंगे, मोहित कोलर के बिल्कुल नीचे से यहाँ पर एक बोनस लेने का प्रयास, और एक आसान सा यहाँ पर क्या बोनस मिला है ये देखना होगा.
और जी हाँ बिल्कुल, यहाँ पर बोनस इन्होंने प्राप्त किया है। प्रतीक दहिया की आप लगातार चर्चा कर रहे थे, जिस तरह से सपोर्ट साहिल ने दिया है, मनु ने दिया है, परंतु उसके बावजूद जानते हैं प्रतीक दहिया कि उनका मैट पर रहना और उनका प्रदर्शन करना कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एक बार फिर से That is a wow dupki. That's all. That's all I can say. The right cover coming in with the chain and not low enough. Not low enough for Pratik Daya. For a tall raider, going in so low shows his flexibility. That is really important. And Pratik Daya has done this so much often. And we've seen that. Oh, strong block. Turn, tumble. Ashish Narwal says 3 points. Will the referee agree to that? It was a strong block from the right cover, but the turn completely against Rajneesh Narwal's block. Oh, Rajneesh Narwal is actually holding his head because he went in big. A block was there. See, look at him. Look at him. He's holding his head. He would have definitely got some hit against the biggest Panther there. Only 2 points. Only 2 points. जी हाँ, 2 पॉइंट यहाँ पर लेकर आएंगे जरूर। रजनीश नरवाल वहां पर थे और एक और साथी का उन्होंने शिकार बनाया। पावरफुल ब्लॉक एक बार लगा था कि चले एक बहुत अच्छा ब्लॉक यहाँ से नजर आएगा, परंतु जिस तरह से वो ताकत है आशीष नरवाल में, जो उनमें एजिलिटी नजर आती है, जो स्किपिंग स्किल्स नजर आती है। इस बार रिवर्स एंकल होल्ड का प्रयास आशीष मलिक का यहाँ पर जरूर एक बार उस फिसलन से निकल गए थे, उनके हाथ के चंगुल से निकल गए थे, परंतु कवर का एक बहुत शानदार सपोर्ट। जी हाँ, आशीष, उमेद और अनीश का वहां पर एक शानदार सपोर्ट नजर आया इस बार आशीष मलिक को। No argument, no argument. Once again from Sumanji, very, very important. You cannot argue. I understand it's a high intensity game and blows being exchanged one after the other. Ashish Narwal now. He will have to think about this match in a different game. He can also exhibit the dupki. It is not just Pratik Daya, and what a armory that Pradeep Narwal has given the world of Kabaddi. Watch that 100 times. You will always be amused. Each and every time. Under the chain, tall raider Ashish Narwal gets the dupki, goes through. Now it is Kaziranga Rhinos who will be facing to save themselves from the all-out. It is awesome. It is amazing. This kind of skill exhibition shows why both the raiders from each team are at the top 2 places. Diving hand touch. He immediately argues. Anish is immediately arguing, but Ashish Narwal does not allow Pratik Daya to settle down. Goes in, tries to clean up. He has to come back for another touch. Is it? This time Sahil gives it away. This time Sahil gives it away. Wants to go for Pratik Daya. Come on! Come on! This is unbelievable. All out. I keep telling you this. If you are casual on the Kabaddi mat, you become a casualty. You just cannot be casual even if you are the topmost raider of this Yuva Kabaddi series. Ashish Narwal, take a bow. बिल्कुल वहां पर बेहतरीन कार्य उन्होंने दर्शाया और हमेशा कबड्डी खेल में बने रहना हर खिलाड़ी के लिए बहुत ज्यादा आवश्यक होता है। सबसे पहले वहां पर मोहित खोलेर को अपना शिकार बनाया, उसके बाद जैसे देखा कि प्रतीक दहिया रेड डालने के लिए आ रहे हैं, वहां पर पॉइंट लेकर आए। अब देखना होगा प्रतीक दहिया एक बार फिर से, क्या ये एक बारी रेड हो सकती है? कितने पॉइंट्स यहां से आपको नजर आ सकते हैं? आशीष, उमेद तो निश्चित तौर पर है। 2 पॉइंट्स यहां पर प्रतीक दहिया एक बार फिर से काजीरंगा राइनोस को क्या लीड में ले जाते हुए नजर आएंगे। शानदार प्रदर्शन। पेरियार पैंथर्स पिछली दफा लीड में आई जरूर थी, परंतु एक बार फिर से प्रतीक दहिया का शानदार प्रदर्शन आपको नजर आएगा। कितने पॉइंट एक बार फिर से रेफरीज चर्चा करते हुए नजर आ रहे हैं, देखना होगा। Yeah, Sumanji also giving a strong word of warning for the coaches, asking कि आप लोग क्यों बोल रहे हैं? Yeah, that is what it is. That is the intensity of this game. The whatever we kept on saying, the Josh, Jazba and Junoon, we don't even have to say that. It has been virtually seen. It is really seen in the Kabaddi mat. Look out for a tackle. That is a revenge tackle. That is a strong revenge tackle from the right corner. And that was really important from Hitesh Kadyan and Manu in the chain from the right flank. So important. And Ashish Narwal has been sent out. This game is being played like a finale of Yuva Kabaddi series, and how much
how much of revenge is there in both the teams. Look at that. Periyar Panthers do not want Kaziranga Rhinos to get qualified for the challenger round very easily. They want them to really go back even in this round. And Parthik Daya gets 2 or 1. Oh, 1 point, 1 point. एक पॉइंट आसानी के साथ मिलेगा और बिल्कुल सही कहा नवीन आपने कि ये फाइनल वर्दी एनकाउंटर आपको नजर आएगा। जिस तरह से दोनों ही टीम्स में जज्बात नजर आ रहे हैं, वो जीत के प्रति जुनून नजर आ रहा है, वो जुनून यहाँ पर। और हितेश कादियान का ये सुपर वेस्ट होल्ड, सुपर बैक होल्ड हितेश कादियान अभी तक शुरुआती 14 मिनट 13 मिनट के खेल में इतना अच्छा नजर नहीं आए थे, परंतु पिछले 2 डिफेंस में उन्होंने दर्शा दिया है कि ये अपनी टीम के टॉप डिफेंडर्स में से एक है। पिछले कुछ मुकाबलों में इन फॉर्म है और 40 टैकल पॉइंट प्राप्त किए हैं उन्होंने। Absolutely, and super tackle situation on, but Parthik Daya will look at it as an opportunity to clean it up, but no, just 1 point. Look at that running hand touch. Oh, he is so quick. He is so fast, and I am really trying to give a name for his speedness and for his agility. And now there is a substitution. Monu Jakar comes in to save the Periyar Panthers from another all-out. And let me tell you something, this is going to be a match which will decide Kaziranga Rhinos' future in the booster round. And that is why Periyar Panthers are not wanting to give it away. But Hitesh Kadian says, no way, even if you are jumping on top of me, I will push you out of the end line. The bonus, of course, is being taken by Monu Jakar, and today the referees, the commentators, everybody have been made to sit at the edge of the seat, and referees having a lot of work to do. It's a high intensity clash, and once again I really want to apologize to all the viewers on Fan Code that we are not able to churn out the replays for such a high epic match. बिल्कुल नवीन, जिस तरह से आपने बताया कि बहुत हाई वोल्टेज मुकाबला है। ओह, इट्स नॉट ओवर अंटिल इट्स ऑल ओवर। नवीन, आप पहले सेलिब्रेट कर नहीं सकते हैं। अर्ली सेलिब्रेशन आर ऑलवेज डेंजरस। जब तक उस रेड का निर्णय ना आ जाए, यहाँ पर मनु गए, टो टच किया, सेलिब्रेट किया, थाई फाई लगाया और वहां से शानदार टैकल पेरियार पैंथर्स के कवर्स की तरफ से। क्या बात है, क्या अद्भुत विलक्षण खेल का प्रदर्शन आपको नजर आ रहा है कबड्डी के मैट पर। Ashish Umed was the man there. Naveen Sharma actually accepted that the toe touch was being given. But when Ashish Umed came, Naveen Sharma said, no, I'm not expecting this. I am not agreeing to this. And he takes away that block. And no points there for Ashish Narwal. Oh, after a long time, there's an empty raid. Oh, what a match. What a match. And I really challenge everybody watching this match. You just can't take your eyes off this game. You just cannot do it. You cannot take an eyes off any kabaddi game. But this one, get 4 eyes on this. 2 is not enough. Naveen Sharma cannot hold Parthik Daya back. And the coach is now thinking, what is going to happen to my team? So much front of the back line. You cannot tackle Parthik Daya, and a lovely outward turn by Parthik Daya, even with the ankle held so strongly by the top defender of Yuva Kabaddi series. Gets 2 points. और इसी के साथ लीड बढ़कर अब 8 पॉइंट की हो चुकी है नवीन। और जिस तरह से काजीरंगा राइनोज और पेरियार पैंथर्स दोनों ही एक स्टेप पीछे लेने का प्रयास नहीं कर रहे, वो आक्रामकता दोनों में नजर आ रही है, वो पॉजिटिव इंटेंट। और इसलिए हमें पहले हाफ में देखिए कितना हाई स्कोरिंग गेम है, ऐसा लग रहा है कि नजर आएगा। 23-15 का स्कोर है। काजीरंगा राइनोज जरूर 8 पॉइंट की लीड में है, परंतु जानती है जब तक वहां पर बिगेस्ट पैंथर मौजूद रहेंगे पेरियार पैंथर्स की टीम में आसानी के साथ वापसी करेगी। आशीष मलिक पर जिम्मेदारियां, अनीश पर जिम्मेदारियां, साहिल जाएंगे। He had got the defense at one end. Sahil should have gone in completely, but the dash was not successful. He goes through towards the midline. I'm sorry, coach, there is no review. I'm sorry for that. We will try and see if we can get the replays very soon as possible, and then of course the official review will probably come in from the challenger round, because the survival and the booster round are where the teams have to rely on the original skills that they have instead of the camera skills. And now the discussion is if Sahil Kumar got through the midline from the lobby. I am feeling that it is through the lobby. I do not have any doubt about that, but the men in question
is Anish and of course Ashish Malik, who came in for the dash. Anish from right cover, Harshit, came in with the opposite angle to dash, because he had to change himself, he has to turn himself and go for the dash, and that gave Sahil Kumar the all-important time. Oh, he's been gushed out. Sahil Kumar from the lobby has been pushed out of the court, and the coach says, okay, relax, think it cool. जी और इस मुकाबले की पहली इंपॉर्टेंट डू और डाई रेड यहाँ पर आपको नजर आ सकती है पेरियार पैंथर्स की तरफ से। निश्चित तौर पर एक बड़ी रेड रहेगी। आशीष नरवाल को कोच ने कहा था इससे पहले कि स्लो डाउन रहना, बहुत ज्यादा हेक्टिक मत होइएगा, आप आसानी के साथ अपने स्किल्स के साथ पॉइंट लेकर आ सकते हैं। राइट रेड के साथ शुरुआत किए हितेश का ध्यान पिछली दफा अपना शिकार बनाया था, इस बार मोहित कोलेर ने शिकार बनाया है। शानदार डाइविंग लेग होल्ड, थाई होल्ड और शानदार प्रदर्शन यहाँ पर मोहित कोलेर का। नवीन, it's a full body blow, and that's what is required. Oh, there we go, once again rough tackling. I understand the intensity of this game. Oh, yellow card, 2 minutes out of the mat, unbelievable. Parthik Dhaya is really contesting this, but much required is what I will feel. Manu, Kaziranga Rhinos will get that 1 point, but 2 minutes out of the mat. Strong tackling, rough tackling has been given an yellow card, and I really want to see the yellow cards for arguments. See, I understand the game is on its highest intensity ever possible, but such things just happens with the flow of the moment, with the heat of the moment. It happens. Parthik Dhaya now gets a point, but even then a men cannot be revived. But still, it will be considered as 7 men on court, even if Kaziranga Rhinos are only 6 on the court. It will be considered as 7, because it is Manu who has gone out with a suspension of 2 minutes to the bench. 2 minutes might not look a long time, but in Kabaddi it's a big time. जी और इसी के बीच में रिंकू ने बताया कि चलिए आशीष नरवाल को यहाँ पर सपोर्ट दिया जाएगा मेरी तरफ से अच्छे अंदाज से यहाँ पर। और इससे पहले हमने मनु की बात की, जरूर कुछ समय व्यतीत करेंगे बेंच पर। और जिस तरह से हम बात कर रहे थे 1-on-1 हॉटेस्ट ड्यूएल यहाँ पर द बेस्ट रेडर वर्सेस बेस्ट डिफेंडर का नजर आ रहा है, और लगातार प्रतीक दैया नवीन को अपना शिकार बनाते हुए नजर आ रहे हैं। जरूर यहाँ पर कुछ चर्चा विमर्श हमारे ऑफिशियल रेफरीज करेंगे, परंतु एक बहुत अच्छा बेंचमार्क सेट कर रहे हैं। यहाँ पर लास्ट डे है बूस्टर राउंड का, और एक बड़ा बेंचमार्क यहाँ पर सेट करते हुए नजर आएंगे रेफरीज की। अगर आप चाहे चैलेंजर राउंड हो या फिर जब नॉकआउट यहाँ पर आप खेलेंगे मुकाबले, तो भी अगर आप इस तरह की गलतियां करेंगे तो यहाँ पर आपको लगातार हमारी तरफ से स्ट्रिक्ट एक्शंस लेते हुए नजर आएंगे। Yeah, I understand strict action, but somewhere I really thought that it was a little too rude. See, I would have been with the referees if the yellow card would have come for any arguments. You know, that is what we really do not want to see. Yeah, I understand rough tackle. Yeah, I agree. A green card should have been fine. A verbal warning also would have been fine. But somewhere the heat of the moment, getting it to cool down some nerves. Right. Parthik Dhaya with a dubki, and as he's got 2 points, and I love the reaction. From Mohit ji, the coach of Periyar Panthers. I was really happy to see that reaction. It is like a true fan who's reacting to the error that happened from the defense. It is not a coach's reaction. It is a true fan's reaction, and that is why I like Mohit ji, because he expresses himself so very nicely and so very truly, Harshit. What the expressions are, क्या बात है। और मोहित जी के लिए मैं कहना चाहूंगा, ये आप किस लाइन में आ गए हैं मोहित जी, आप जरूर मुंबई जाइए, थोड़ा सा अपने आप को ट्राई कीजिए। जिस अंदाज में यहाँ पर एक्सप्रेशंस नजर आ रहे थे आप फैबुलस, और फैबुलस उतना ही यहाँ पर ये हितेश कादियान का एक बार फिर से टैकल था नवीन। तो हाई इंटेंशन गेम है, सबकी इंटेंसिटी हाई है, और आशीष मलिक का आज वहां पर वो पंजा काम नहीं कर रहा है, उनके एंकल होल्ड कार्य नहीं कर रहे हैं नवीन। Yeah, very much. On the other hand, Hitesh Kadian is making sure the right corner is as strong as it can get. And now the Periyar Panthers once again reduced to just one man. The solo man standing Nitin will have to save themselves from another all-out. Will he do it? It was a very wrong move
A very wrong attempt. A high line of defense from Mohit Kolar and Sahil Kumar. Could not retrieve themselves back in the chain, and somewhere now Mohitji will be happy that the all-out was not inflicted in the end of the first half. But the error, big error coming from Mohit Kolar and Nitin saving Periyar Panthers at the last moment. And see who's been revived. The biggest Panther is back on the court, and he will start the second half with a lot of vengeance, with a lot of anger, and with a lot of revenge to take off. What a half. What a half it was, Harshit. And this is what we want to see in the game of Kabaddi. And let me tell you, I do not want this result, but now, even if this match ends up in a tie, I will not be really disappointed, because the way both the teams have played, I feel both can win this game. बिल्कुल, परंतु अभी काजीरंगा राइनोस जिनके पास 11 पॉइंट्स की लीड है और एक अच्छे मौके पर है कि एक और बार यहां पर क्या ऑल आउट की तरफ धकेल सकते हैं पेरियार पैंथर्स को। बहुत अच्छी लीड यहां पर जरूर बनाई है पेरियार पैंथर्स के विरुद्ध 18-29 से यहां पर आगे हैं। और बिल्कुल आपने सही कहा, दोनों टीम इस अंदाज में खेल रही है कि किसी के पक्ष में मुकाबला जाए, जीतेगा तो सिर्फ कबड्डी। जिस अंदाज में दोनों ही टीम का प्रदर्शन नजर आ रहा है, 2 बार ऑल आउट किया है काजीरंगा राइनोस ने पेरियार पैंथर्स को, एक बार पेरियार पैंथर्स ने भी ऑल आउट किया है। तो हाई वोल्टेज मुकाबला यहां पर नजर आ रहा है और हमारे फैन कोर्ट पर जितने भी दर्शक हैं वो निश्चित तौर पर बहुत ही ज्यादा अम्यूज करते हुए नजर आएंगे। जिस अमेजिंग अंदाज में ये खेल का प्रदर्शन नजर आ रहा है, नवीन, जितनी तारीफ की जाए शायद उतनी कम कबड्डी के खेल की। No, that is what I was really amused, and the way Periyar Panthers is putting up such a big fight to stop the Kaziranga Rhinos. And first time, I'm just trying to relate this with the logos of both the teams. The logos of the Panthers are so much in tune with how they are playing today, and they are going for the win, and the Panther is trying to stop them. This is so evident. Right, let's not even take any breaks. It's all fine. We'll keep sticking on to the feed, and we will make sure that on fan court this has been enjoyed to the fullest, as the venue partners of Yuva Kabaddi series, Sanskar School Jaipur, will be once again thanked for all the support. And I really want to have a mic on Mohitji in the next challenger round very soon, because we are just trying to see if we can get some mics also for the coaches. That will give us even more insight of their feel, even more insight of their what the strategies and thinking are. But let's see if that also happens. But now Pratik Daya will go in and try to clean it up. Only 2 raiders left on court. So now somewhere Manu has finished his penalty. He's back on court. So no affected 2 minutes for the Kaziranga Rhinos. Start of the second half. Come on. Now Ashish Narwal or the other raider Nitin who saved them. Ashish Narwal has to go back. Look at that. Pratik Daya does not even... Oh, come on. This is top raider versus the second top raider. Just fighting over a defense point. और एक बहुत ही विश्वसनीय यहाँ पर आपको ये दृश्य नजर आया था। जिस तरह से देखा यहाँ पर, पहले प्रतीक दैया ने यहाँ पर पहले डाइविंग के लिए वहां पर जाना चाहते थे, परंतु चलिए पिछली रेड की क्यों वार्तालाप करें जब इस रेड की वार्तालाप कर ली जाए। नितिन जागलान एक बार फिर से क्या सेव करने में यहाँ पर खुश हो पाएंगे, क्या बचा पाएंगे अपनी टीम को। नितिन जागलान पिछली बार भी ऐसा करते हुए नजर आए थे। एक बार फिर से रेफरी थोड़ी सी चर्चा करना चाहेंगे, क्या मोहित कोलेर को वहां पर अपना शिकार बनाया है, देखना होगा। यहाँ पर कोच जरूर हंस रहे हैं और ये मुस्कुराहट अच्छी है, काजीरंगा राइनोस के कोच के चेहरे पर ही मुस्कुराहट अच्छी है। परंतु लीजिए आप, ऑल आउट, तीसरी दफे यहाँ पर निश्चित तौर पर आपको नजर आएगा ये ऑल आउट। Right. Periyar Panthers getting that all out, and that is really good signs for the Kaziranga Rhinos. Third all out inflicted on them, and look at the score difference now. Now look at the score difference. Can the game be slowed down now, or just they want to keep killing and making sure they get a lot of points? Game will not be slowed down by the Periyar Panthers though. Right corner, Navin Sharma showing why he is so strong, with a strong ankle hold against Sahil Kumar.
जी आप बात कर रहे थे कि हॉटेस्ट 1-on-1 ड्यूल हो सकता है प्रतीक वर्सेस नवीन, परंतु चलिए प्रतीक अभी तक उस क्षेत्र में आगे करते हुए नजर आए, परंतु नवीन कह रहे हैं कि चलिए अभी तक अंत हुआ नहीं है इस मुकाबले का, ही विल बी बैक। और शानदार एंकल होल्ड के साथ उन्होंने वापसी की है। और अब आशीष नरवाल, प्रतीक दहिया और वहां पर मोहित कोहली की जोड़ी के पास जाकर बोनस लेने का प्रयास किया, जरूर शायद बोनस मिला नहीं है। और प्रतीक देखिए नवीन कितनी सारी आज रेड्स करते हुए नजर आ रहे हैं। और पिछले मुकाबले में भी मैंने बात की थी कि ये खिलाड़ी असल तौर पर युवा कबड्डी सीरीज के सभी मायनों पर, सभी टेस्ट पर अभी तक खरा उतरता हुआ नजर आया, चाहे फिजिकल स्ट्रेंथ हो चाहे मेंटल स्ट्रेंथ हो। इतने बड़े थ्रू आउट द टूर्नामेंट में लगातार इतनी सारी रेड्स करते हुए भी हर एक रेड में वो नई एनर्जी इनमें नजर आती है नवीन। And he is very hungry with energy. He is also hungry today for the win. It's very, very important, and he wants to stick on to that top raider position. And if you remember what happened in the super tackle situation when Ashish Narwal went in for the diving ankle hold, Parthik Daya did not even turn back and look at him. It was the swag of saying, I got you. And stop being casual on a kabaddi mat. Not against Ashish Narwal. Thankfully, it is just the left corner for the Periyar Panthers, Ashish Malik, who went off on the bench. It was so close for a second point. But now, Sahil Kumar. And thankfully, he's also trying to slow down the game, Harshit. जी हाँ, पहली दफा में ऐसा नजर आया। पिछली बार आशीष नरवाल ने मोहित कोहली को अपना शिकार बनाया लेफ्ट कॉर्नर से, और साहिल कुमार अब पहली बार इस मुकाबले में नजर आया है नवीन कि कोई एक खिलाड़ी मोमेंटम को स्लो डाउन करने का प्रयास कर रहा है। वो जो तेजी नजर आ रही है उस तेजी को थोड़ा सा प्रयास कर रहे हैं कूल डाउन करने का। निश्चित तौर पर ये खिलाड़ी तो नहीं करना चाहेगा आशीष नरवाल, हालांकि 5 का हाउस है, 5 के हाउस में पॉइंट लाना थोड़ा सा मुश्किल होता है। हितेश का ध्यान पर नजर रहेगी, हितेश का ध्यान लगातार चेन टैकल करते हुए नजर आए आशीष नरवाल को जब जब आशीष उनके पास गए नवीन। Very quiet. He is trying his best. Has to be careful. The right flank. Sends him away hungry, because he understood that the defense is not coming to him, and he went back. Now, first do-or-die raid for the Kaziranga Rhinos. Of course, the Periyar Panthers got 2 do-or-die raids, and Ashish Narwal was there. Now, Parthik Daya with a do-or-die raid. Tried to change the page, tried to turn the page across, but then he did it very nicely on the right cover, but left cover also came across and made sure the tackle was successful. This is what I was trying to say. When Parthik Daya turns the pages of the defenders like a comic book, there is one small momentary pause, and you will have to pounce on that. And that is what the Periyar Panthers defense did. All marks for Ashish Umed once again for taking that angle. And look at that. That's the biggest high-five ever I have seen. That's the biggest high-five that has been done by Ashish Narwal. I haven't seen so much Jasba and Junoon in the Thai-Fi, Harshit. Oh my God. What a high voltage game this is, सरजी। क्या बात है, क्या खेल का जज्बा नजर आ रहा है और क्या यहाँ पर जोश नजर आ रहा है। परंतु चलिए, स्विफ्टनेस देखिए, मानसिक बल की भी आवश्यकता होती है। टो टच करने का प्रयास किया था, परंतु चलिए मना कर दिया है यहाँ पर। और अब एक बार फिर से आशीष नरवाल, और क्या बात कर रहे थे नवीन आप, बिल्कुल ये वो हाई वोल्टेज हाई इंटेंसिटी मैच यहाँ पर चल रहा है। और एक बार फिर से आशीष नरवाल रेड पर। Wow. Right. Super tackle situation on. Let us just take this moment and soak this in. Under the chin, Dubki was trying very soon. He's still struggling, but has to give up. Coach is happy for that. And a super tackle on Parthik Daya's team is being completely executed on Ashish Narwal. And this is nice to see. Wow. So Jagmal Singh was happy. Today has been the day of warnings. Rajneesh Narwal and Naveen Sharma given. I mean, it's just that one moment away from Sumanji saying, "Okay, call your parents. I want to talk to them." That is what it is. Like a principal who always tells that, no, just call your parents. I want to talk to them. Enough of warnings. She's gone to that level now.
नवीन क्या बात है। और देखिए यही मुकाबले की लगातार आप बिल्कुल बात कर रहे थे, क्योंकि ऐसा ये शानदार मुकाबला बन चुका है, ऐसा एक शानदार खेल का नज़ारा यहाँ पर आपको नजर आ रहा है नवीन, कि निश्चित तौर पर रेफरीज को भी यहाँ पर अपना थोड़ा सा बेहतर करना होगा। जहाँ पर खिलाड़ी ज़्यादा उत्तेजना ला रहे हैं, रेफरीज में भी आप जरूर देखने को मिलेंगे कि आप उससे किसी तरह से हैंडल कर सकते हैं। परंतु अब चले मनु आए हैं, लेफ्ट हैंड के साथ शुरुआत करेंगे नवीन की तरफ से। यहाँ पर राइट कॉर्नर नवीन है, उनके साथ में नितिन जागलान, लेफ्ट टू राइट coming across, and Naveen Sharma showing, okay, if you warn me, I will not accept the warning from the raider. I will accept the warning from the referee, but not from the raider. It's a do or die raid situation that was for Manu, and look at the tackle that came across from Naveen Sharma. Now only 3 men on court, and Kaziranga Rhinos should understand that there is a lot of time left in this game, and Periyar Panthers know how to win games from back. And this time will he be tackled? Turn, tumble across. Guess what? Look at that clap that has been coming from the behind. Look at the clap that is coming from the bench. It's another super tackle on the biggest Panther. It was a struggle, and then finally he had to go down struggling. क्या दृश्य दिख रहे हैं यहाँ पर हमें संस्कार स्कूल युवा कबड्डी सीरीज कबड्डी के इस मैच से। देखिए ऐसा कोई दृश्य, ऐसा कोई वहाँ पर हाई तकनीक यहाँ पर आपको इस मुकाबले में नजर नहीं आई है जो अभी तक आपको देखने को मिली हो। इसमें अग्रेशन नजर आया है, इसमें करेज नजर आया है, इसमें पैशन नजर आया है, इसमें स्ट्रगल नजर आया है, और अब साहिल कुमार का यहाँ पर कामनेस नजर आई है। साहिल कुमार जानते हैं एक अच्छी लीड काजीरंगा राइनोस के पास है, 13 पॉइंट्स की लीड है, और बिगेस्ट पैंथर अभी मौजूद नहीं। तो चलिए थोड़ा सा समय व्यतीत कीजिए। नितिन जागलान एक दफे अपनी टीम को ऑल आउट से बचाया था, परंतु अब टच पॉइंट की आवश्यकता होगी, बिगेस्ट पैंथर को रिवाइव कराना चाहेंगे अपनी टीम के लिए। I was just trying to see if something can happen, but Nitin Jaglan just goes back. Right. When Partik Dahiya and Ashish Narwal is not on court, Harshit, I think we are breathing for the first time in this match. Absolutely, Naveen. बिल्कुल सही पकड़े हैं आप. Oh my God. And that really, gave that one momentary pause in this game for us to take a little bit of water and sip. No, I'm not joking, or I'm not just saying it for a metaphor. I'm literally sipping up a little bit of water because both the Raiders are not on match. और देखिए नवीन, जिस तरह से कहा जाता है ना कि गाड़ी सीधे 5वें गियर से दूसरे गियर में उतर गई, ऐसा नजर आया। ये एक तो होता है गाड़ी 5वें गियर में चलती है, परंतु चलिए अब यहाँ पर एक बार फिर से 4th और 5th गियर डालना होगा साहिल कुमार को, क्योंकि जो डायरेक्ट है नवीन, आप फिर से एक सिप ले लीजिए वाटर की, क्योंकि आ रहे हैं एक बार फिर से कुछ बड़े खिलाड़ी मैच पर। No way, come on. That was a raid of top gear. It's not even 5th gear, it was a 6th gear raid from Nitin Jaglan, because what happened there was, it was very, very important because it was a do or die raid, and in fact now Nitin Jaglan comes in. Of course he has to shift back with the top gear as Sahil Kumar did in the previous raid. It's very important now for him also to revive if he gets a touch point. Of course, Ashish Narwal will be revived, goes in deep, gets his hand touch. What a strong running hand touch on the left corner, and it is a spot of bother for the Kaziranga Rhinos. Is Mohit Koler in that left corner position, could not revive himself from that position near the end line. And now both of them back, the top raider and the top second raider, and I'm still thinking, what do we call Partik Dahiya? I wanna just name him something related to Storm, something related to Hurricane, or something related to Cyclone, because that is what he brings in. Of course, the biggest Panther is Ashish Narwal, but Partik Dahiya, you just can't call him a biggest Rhino. No, that's not right. We just have to give him some name. जी हाँ बिल्कुल। और नवीन देखिए, आप स्क्रीन पर भी एक आंखों से देख सकते हैं और अपने एक दिमाग से सोच सकते हैं। तो नवीन देखिए, मेरी इतनी सोचने की क्षमता कार्य करेगी नहीं इस मुकाबले को देखते देखते, तो मैं चाहूंगा कि आप भी थोड़ा सा सोचें और इस मुकाबले में कुछ एक ऐसे नाम के साथ यहाँ पर प्रतीक को भी निवाजें कि वो इंसाफ करें इनसे काबिलियत के साथ। Absolutely. Let me try my best, but yeah. Let's
once again see if Pratik Daya can play with his brains. He's until now made sure he's exchanged blows on blows. It was like two superstars trying to blow out each other, and somewhere the Periyar Panthers now have taken a lot of blow, and that is why Pratik Daya has got that extra bit of time to take a breather. And somewhere the game has to slow down, and this is the right moment by Pratik Daya. He's thinking on his feet. He's thinking on the match situation. And now Ashish Narwal will have to do something. He will go in, definitely try and attack the right flank. Hitesh Kadyan has to be careful. The launch can come from any time. The pounce can happen from the Panther any time. That's nice. That is really nice by Hitesh Kadyan. He held on to it very, very cool and calm. It's a do-or-die raid now, I guess, once again for, yes, there we go, for Kaziranga Rhinos. Very important for Sahil Kumar now to get a touch point. या बिल्कुल एक बार फिर से साहिल कुमार बोनस लेने का जरूर किया, शायद प्रयास करेंगे। डू और डाई रेड एक इंपॉर्टेंट रेड है। आशीष मलिक और वहां पर नवीन शर्मा पर बहुत कुछ निर्भर करेगा। क्या नवीन शर्मा को शिकार बनाया है? एक और बार ये शानदार स्वीपिंग टो टच नजर आया है, और जिस तरह से यहाँ पर सही समय पर वहां पर बैठे थे, जिस तरह से अपना टो टच किया, आप देखना चाहते थे थोड़ा सा और बेहतर डिफेंस, परंतु एक शानदार टो टच। Yeah, absolutely. The toe touch was nice, and we are watching the another do-or-die raid now. The biggest Panther himself in, but I'm happy to see the small kids from Sanskar School Jaipur who are here with the uniform to watch this match. And why not? Why not? When Hitesh Kadyan can put up such a chain tackle along with Sahil Kumar, and look at that just in the backdrop of the coaches. Thank you so much once again for Sanskar School Jaipur to send in the students to watch this high intensity game. This is amazing, and I love the uniform also, which has yes, the symbol yes, which is inside a symbol of which gives the celestial body's appearance. It is nice. It is nice for these kids to come and watch this high intensity match. जी हाँ, बिल्कुल बहुत ही अच्छा लगता है जब इस प्रकार से खिलाड़ी देख रहे हैं, और देखिए सबके सब खिलाड़ी कैसे देख रहे हैं, कितनी उनमें भी ऊर्जा नजर आ रही है कि जिस रफ्तार के साथ इस कबड्डी के गेम को समझना चाह रहे हैं और देखना चाह रहे हैं कौन सी टीम किस अंदाज में प्रयास कर रही है। और जरूर शायद एक बार यहाँ पर आप मोहित हुड्डा जी देखिए थोड़ा सा यहाँ पर टाइम आउट लेकर कुछ वार्तालाप करना चाहेंगे, लीड जरूर है यहाँ पर, और देखिए इनकी इंटेंसिटी देखिए ये। For the Kaziranga Rhinos and Periyar Panthers now need to somewhere come out and say, okay, how do we get this sorted? How do we get this sorted? And of course, Mohit Huda would have given them a lot of good insights. But the second line of defense, the cover was there for the cover chain tackle, but then the dubki was nice by Nitin Jaglan. But the second line of defense, I should really be congratulating Mohit Kholar there from the left corner. He was there as a second line of defense as Rohit Kumar and Rajneesh Narwal could not stop Nitin Jaglan. Now it is Sahil Kumar's turn. Harshit, should I be talking for the Periyar Panthers because they are leading behind, they're lagging behind, and another false tackle for the attempt for the ankle hold by Ashish Malik is gone wrong. जी हाँ, बिल्कुल आपने सही कहा नवीन कि अब थोड़ी सी वार्तालाप यहाँ पर कर लेना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर अच्छा मुकाबला जरूर रहा है। I haven't got the opportunity to talk for the Periyar Panthers because they've always, in a very, very good position. And as you know, I always talk for the team that is lagging behind, just to make sure they also come up and give a good fight and to make the match interesting. Now, Monu Jhakar has been sent in by Mohit Huda for a raid because he's a very, very good raider. He should have tried. He's got the bonus though. That's nice. And come on, danger now. It's a hungry raider who is really making sure that he goes out there and he cleans it up. 2 points, all Shabashgiri given by the team. And how many times have you seen Pratik Daya been congratulated by the team so much? Because they know that from any other team, it would have been just a routine raid. Now the whole team is congratulating Pratik Daya, shows the intensity of this match. Once again, Periyar Panthers are all out. Total destruction.
डिमोलिशन यहाँ पर करते हुए नजर आए प्रतीक दहिया और नवीन। अब मुझे लग रहा है कि अब ये मुकाबला थोड़ा सा स्लो डाउन होता हुआ नजर आ सकता है, क्योंकि अब जरूर जगमल सिंह ने जैसे यहाँ पर ऑल आउट हुए हैं, यहाँ पर एक टाइम आउट बुलाया अपनी टीम के लिए, अब थोड़ा सा यहाँ पर सब्स्टिट्यूट होगा। परंतु देखिए, आपने बिल्कुल सही कहा था नवीन इससे पहले कि आप हमेशा उस टीम के बारे में वार्तालाप करना पसंद करते हैं जो लैगिंग बिहाइंड हो, परंतु पॉइंट्स के हिसाब से जरूर आपको नजर आएगा कि पेरियार पैंथर्स लैगिंग बिहाइंड हो रही है, थोड़ा सा पीछे हटता हुआ नजर आ रहा है, परंतु उनके इंटेंट से बिल्कुल भी ऐसा लगा नहीं, इसलिए आपको ज्यादा मौका नहीं मिला। परंतु लीजिए आप, क्या यहाँ पर एक पॉइंट मिला है? जी नहीं, कॉल किया था। No. You know what happened? You should have seen. Oh my God, I'm missing the replays today more than anything. Just for one bonus, the whole team of Kaziranga Rhinos is just going out for Ashish Narwal and says, no, you didn't even get the bonus. The whole team, not just left corner. It is the whole team, all 7 men against Ashish Narwal, and says, no, you've not got the bonus. Come on, if this is the point, then what do I speak about Periyar Panthers? What do I speak? How do I bring them back into this game? At least by my talks. Okay, let me try. It's a simple strategy now of what Periyar Panthers have done earlier. It's a strong ankle hold, and these kids from Sanskar School Jaipur enjoy this. I love to see kids watching Kabaddi apart from any other video game. There's another warning. Yeah, there we go. Rajneesh Narwal, of course, I know these are very young lads. They are 23, 22, and of course, Sumanji will have all the rights to say, अगली बार इतना argue करोगे तो मैं आपके माँ और बाप के पास बात करूंगी. That's what she would have said. बिल्कुल नवीन, और देखिए बिल्कुल आपने सही कहा कि इस मुकाबले में आपको एक नई चेतना नजर आई है। जिस तरह की सूर्य की किरणें जब धीरे धीरे धरती पर पड़ती है तो धीरे धीरे वो मुकाबले में गर्माहट आने लगती है। इसी प्रकार से यहाँ पर इस मुकाबले में धीरे धीरे गर्माहट आती चली गई, और शुरुआत से जिस अंदाज में आज काजीरंगा राइनोज और पेरियार पैंथर्स ने शुरुआत की थी इस मुकाबले की, लगा था कि टॉप नॉच गेयर यहाँ पर आपको नजर आएगा, और वो केयर आपको थ्रू आउट द गेम नजर आया है। अब काजीरंगा राइनोज एक अच्छा कार्य कर रहे हैं कि थोड़ा सा वो अपने इंटेंट से मोहित कोलेर एक बार फिर से देखिए तालियों से उत्साहवर्धन नजर आ रहा है। सभी संस्कार स्कूल के यहाँ पर श्रोता कह लीजिए, आप स्टूडेंट्स कह लीजिए, ये बता रहे हैं। ओ, यहाँ पर एक और येलो कार्ड दिख सकता है, मुझे लग रहा है नवीन। Oh, yellow or red. Oh my God, yellow or red is what Suman is trying to say. Right. Kaziranga Rhinos, Hitesh Kadian's got a red card. Oh, that's a first one in the Yuva Kabaddi series. It's a red card. One technical point also given away. Oh, it is Manu. Correction, it is Manu once again with a strong, brutal tackle. He was given a yellow card before this, and now Sumanji has got all the rights to give him the red card because it was the yellow card which was already given. I was thinking it was, it was somewhere another defender. But nice point in a do-or-die raid. But just going back to that card for Manu, I was just thinking it was Hitesh Kadian. But then Manu has got that red card because he had already got the yellow card, remember? So that was the legal approach. And see, if this is the intensity, I'm sure there should be some brutal tackling happening from Manu. If not, Sumanji will not get so serious. I know she's a serious referee when it comes to just verbal warnings. She keeps it under wrap. But if she's given the red card, there has to be something that Manu has done, and she's really livid with what he did on Ashish Narwal. Because remember, Harshit, even in the previous time when he got the yellow card, it was when he was tackling Ashish Narwal. So somewhere a strong elbowing or scissoring or holding the neck very tightly, or going and putting out the elbow onto the stomach of the raider. Something has happened which is really not fair for the game of Kabaddi, and that's why he's been red carded out. So what does that red card mean is he's out of this game, but he will be considered that he's on the mat. So if Kaziranga, look at that, that's what happened. Kaziranga Rhinos were only 5 men on court,
but then the bonus was stolen away because it is assumed and presumed to be 6 men on court. What happened here? What happened here? आसान सा एक पॉइंट यहाँ पर साहिल कुमार को, और बिल्कुल आपने सही कहा कि जिस तरह से पिछला बोनस मिला हो, चाहे वहाँ पर आप मनु की बात कर रहे थे कि क्यों उन्हें किस तरह से रेड कार्ड दिखाया गया, क्योंकि उन्होंने बिल्कुल टैकल्स में येलो कार्ड के समय में मुझे याद है कि जरूर वहाँ पर रेफरी सुमन जी ने बताया था कि वो हाई इंटेंसिटी के साथ टैप करते हुए नजर आ रहे हैं लगातार रेडर्स पर। और चलिए बिल्कुल आपने टैकल में उन्हें ब्रिचुअल फोर्स लगाते हुए देखा। और हम जिस तरह से बात कर रहे थे वो रेड कार्ड का महत्व देखिए स्टूडेंट्स को भी और भी ज्यादा समझ आएगा। ओ क्या यहाँ पर एक सोलो टैकल है, क्या बात है यहाँ पर, ऐसा लगा ही नहीं यहाँ पर कि ये टैकल होगा। ऐसा लग रहा था कि क्या नितिन जागलान आउटवर्ड टर्न लेंगे, धीरे धीरे मिड लाइन की तरफ जाएंगे, परंतु क्या शानदार पकड़ बना ली थी यहाँ पर शायद वहां पर मोहित ने या फिर रोहित थे। Yes, it was Mohit Kolar, and now a super tackle. And these kids are just enjoying. I'm happy that these kids have come in, because that has also taken away a lot of heat off this game, because we've seen some smiling faces, we've seen some innocent faces trying to enjoy the game for the realness of it, and not really getting into a lot of aggression. And I'm really thankful to Sanskar School Jaipur for sending these innocent hearts onto the kabaddi mat. बिल्कुल नवीन, बहुत महत्वपूर्ण है और हर जगह से आपको कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है। जिन स्टूडेंट्स को सीखने को मिला होगा कि चाहे आप अपनी लाइफ के किसी भी महत्वपूर्ण स्टेज पर हो, आपको अपनी लिमिट्स क्रॉस नहीं करनी होती है, अन्यथा आपको भी रेड कार्ड दिखाया जा सकता है किसी और तरीके से। डिसिप्लिन का महत्व कितना ज्यादा होता है, उसी के बीच में लीजिए आप साहिल एक बार फिर से शानदार प्रदर्शन लगातार कर रहे हैं। शानदार सपोर्ट आज इन्होंने अपनी टीम को दिया है, प्रतीक दहिया को दिया है, और एक बार फिर से ऑल आउट की दहलीज पर। Yeah, he showed two skills there in that raid, Harshit. Two important skills. One, he pressed the defender down and took away his ankle in that, arre mere pair mat padiye sort of an escape. And then what he also did was he anti-blocked the defender from his left hand and then the outward turn. So it's a combination of skills that was shown, but it is a combination of ruthlessness, aggressiveness and high intensityness by the Kaziranga Rhinos to make sure they put off Periyar Panthers' scare. And it's nice to see. It is nice to see Pratik Daya going up front in front of everybody and just congratulating for the fantastic game. And also few bit of love exchanged by both the top raiders as they were congratulating each other. They said acha khela, and Ashish Narwal also reciprocating back and saying, okay, that was a good intention, that was a good intensity shown by you. I will look after you in the next match. I will be waiting for the next match, and I will look after to you in the next match. But first red card game, so that shows the intensity what this game brought to us. A first red card in the Yuva Kabaddi series to Manu. बिल्कुल आज यहाँ पर हमें नजर आया रेड कार्ड निकलता हुआ भी, और आज एक बार फिर से हमें नजर आया कि प्रतीक भैया के जो हंगर है उनके पॉइंट्स के लिए, जो महत्वपूर्ण मुकाबलों में अपनी टीम के लिए वो प्रदर्शन करते हैं, बहुत अच्छे अंदाज से ओवर 20 पॉइंट्स उन्होंने प्राप्त किए। 54-33 से मुकाबले को समाप्त किया काजीरंगा राइनोस ने, और पूरी तरह से यहाँ पर बदलाव आपको देखने को मिला रेड पॉइंट्स में। 30 रेड पॉइंट्स काजीरंगा राइनोस के पास, 22 पेरियार पैंथर्स के पास, टैकल पॉइंट्स 15, और वहीं पर पेरियार पैंथर्स के पास 8 टैकल पॉइंट्स। और सबसे बड़ी बात आज नजर आई है कि आज वहां पर आशीष मलिक का न चलना, अनीश का न चलना, नवीन का ज्यादा अपने उम्मीद के मुताबिक न प्रदर्शन करना थोड़ा सा एक पेरियार पैंथर्स को सोचने पर मजबूर करेगा, परंतु काजीरंगा राइनोस फिनोमिनल नजर आई है, इनॉर्मस नजर आई है, इलस्ट्रियस नजर आई है, और इमेंसली इनका तारीफ करना चाहेंगे जिस अंदाज में उन्होंने प्रदर्शन किया है। नवीन, by God, Harshit, that is the biggest superlative degree terms in English that you've always been used. You have not used so much English superlative terms in any match, so that shows the intensity of this match. Right, 15 tackle points for Kaziranga Rhinos, and that puts them right up there, and at 40 points they kind of secure that 5th place once again. So now it is down to Taroba Tigers and the Humpy Heroes and the Panchala Pride to fight it out. So Kaziranga Rhinos slowly moving up and making sure with such performances they are not going away in the booster round. They will go through to the challenger round is what I am feeling.
But it will be interesting to see how Tadoba Tigers will look at this match, and because they will have to win this game to secure that 6th place. And it is really important because they play today later in the day, and they will be again taking on a team which is already there in the top 3. So it is very important. And the way Kaziranga Rhinos have played, they will definitely topple upon Hampi Heroes anytime, because it is just that 1 point that separates them, because Kaziranga Rhinos have played more matches than the Hampi Heroes. Hampi Heroes are there on top with points per match in their favor, but it is not a big difference. It is not at all a big difference. They can be